Oh, hi YouTube family. So today we will talk briefly about how the multicellular organisms have been evolved from the unicellular ones. So starting from the very basics, we have I think learned about in our biology classes during the ninth standard about the prokaryotes and eukaryotes. So that's very simple that prokaryotes are the unicellular organisms and the eukaryotes are the multicellular organisms. That is the humans because they are multicellular organisms, the animals, the trees, etc. So बेसिकली क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं दे आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज बैक्टीरिया एंड आर्की ठीक है एंड वी नो दैट एवरी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज हैविंग इट्स ओन डीएनए okay so dna is basically helping us to identify that yes there are different species so likewise the bacteria and archaea are also having their own dna so what happens with the passage of time this prokaryotes or the unicellular microorganisms they are classified into bacteria and archaea so what happens bacteria host inside archaea and invading it uh, doesn't seems any kind of a disadvantage in that so bacteria host archaea so bacteria ने क्या किया bacteria ने time के साथ archaea के body के अंदर enter कर लिया and what happens when further studies were carried out then it has basically been found that there were two different DNAs in the multicells itself. This is basically the eukaryotes. So two different DNAs that basically means what? That simply means two different species. Like one is bacteria, bacteria का खुद का DNA होगा and archaea का भी खुद का DNA होगा. तो उसमें पाया गया कि बेसिकली जो हमारा सेल है जो सेल थ्योरी में हमने पढ़ा था बायो में आई थिंक इन 9th स्टैंडर्ड उसमें हमने पढ़ा था कि सेल जो है उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड सिंथेसाइजिंग एनर्जी. So that mitochondria is basically bacteria that has been hosted inside archaea, and archaea is their entire cell. So it's simple. Like you can say that this is you say this is archaea which is having its own DNA, and this is what bacteria. Bacteria is also having its own DNA. So bacteria ने invade किया archaea को और इसके अंदर ही चला गया. अब ये इसके अंदर चला गया तो ये पूरा एक entire cell assembly बन गया. अब उसमें क्या है कि बैक्टीरिया का खुद का डीएनए और आर्की का भी खुद का डीएनए यानी कि टू डिफरेंट डीएनए इनसाइड द सेम सेल. तो ऐसा इट हैज बीन बेसिकली बीन फाउंड लेटर ऑन दैट इट्स द माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली द बैक्टीरिया ओनली विच हैज होस्टेड आर्की और जो आर्की था वो कंप्लीट इंटायर सेल था एंड दैट लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द यूकैरियोट सेल. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड बाय बाय.